So request, please continue this session. This is a very important session of the first day of the conference of the IPO. As we chartered accountant, as we know, I request my council colleague Jayesh Bhai join the dais. Request all members, please be seated. We are Rakesh Shah sir. We welcome first of all our past president of ICI and the guest of the today of the first panel session, none other than CA Praful Sajed sir. I request Rakesh Shah sir and Jayesh Kala sir escort him. The speaker of the today on the dais, Krishna Iyer, Ratirajit Ribarwal, CEO Capital Choice Advisor Limited, and Deepika Jain, CFO Director, Canom Innovation Private Limited, Domain Expert. I request my regional council colleague Rakesh Bhai for giving the brief introduction and welcome before giving introduction our Honorable Past President ICI Praful Sajed sir. I request Praful sir, please come forward and enlighten us. Welcome, a great round of applause, a past president of ICI, CA Prafulla Sajed sir. थैंक यू, वेरी गुड आफ्टरनून. कहते हैं स्टॉक मार्केट में टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है, कब एंट्री लेना, कब एग्जिट करना. मुझे पता है अभी लंच टाइम है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो पसंद नहीं आएगा. एंड एवरीबडी हैज़ कम हियर टू लिसन टू द वेटरन्स, द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग दिस थिंग. ओनली वन सेंटेंस आई कैन से, नाउ दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द profession of chartered accountancy. Why? Because so many IPOs are coming, not only in the main board but also on the SME platform also. So many people are coming. When government is taking all its initiative of making India 5 trillion economy and world's third largest economy kind of thing, there is a large amount of companies which will be hitting stock market, and I think that is the great opportunity for the profession. With this only, I will because we are running short of time. Immediately I will hand over back to the MOC. Thank you so much. Sir, we appreciate your kindness, your gesture. This is the quality of the Honorable President, past President ICI. Within a short span of the 2 minutes, because he's about to enlighten us more than hour. But this is the quality of you. You chartered accountant, I request you, please keep our lunch for next 1 hour and just give the honor, the respect of all dignitaries which are come here to enlighten you. With this, moving forward, I request. Start the session without wasting the time of the IPO. Friends, as you know, what is the IPO? IPO is just a small bank which is audited by you, which is the DRHP, RHP done by you. Because जो बैंक दूसरी होती है उसको तो RBI लेके आता है, पर जो मार्केट में शेयर बाजार है, शेयर बाजार एक चलता फिरता बैंक है. जिस भी कंपनी का हम एक IPO लेके आते हैं वो क्या होता है, एक बैंक होता है. उस बैंक में हर आदमी इन्वेस्ट करता है, उसको कौन विश्वास दिलाता है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलाते हैं. उसी कड़ी में हम हमारे बीच में बुला रहे हैं हमारे रतिराज रिबरवाल हमारे बीच में है. इंट्रोडक्शन आई रिक्वेस्ट स्पीकर का तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन होता जाए. तो प्रफुल्ल सर ने बिकॉज बोला तो हम लोग थोड़ा सा उसको स्किप कर रहे थे. बट आई रिक्वेस्ट माय रीजनल काउंसिल कलीग राकेश सर फॉर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 स्पीकर्स. Over to you, Rakesh sir. So thank you, Viju bhai. So as requested, I will keep it brief since we are anyway running short of time. So
Today, Mr. Prafula Chhajed sir has already introduced himself as the past president of our institute, and also has been associate with WRC, and is holding various different role. He is also president of CAPA presently. So, next speaker is Mr. Ratiraj Tibrewal. He is a CEO of Choice Capital Advisor Private Limited. He also hold various, he has been associate with the group for more than last 6 years in the area of corporate governance. And his expertise has been in general business and technology. He is a contributor to corporate operations. Next one is Mr. Krishnan, C.A. Krishnan Iyer, is a senior VP with NSE. He is by profession, he is a chartered accountant based in Mumbai, and he is likely skilled in the business relationship management, risk management, corporate banking, and investment banking. Though it's a very detailed CV I have, but I'm keeping it brief considering the short of time. We have a moderator, Deepika Jain, chartered accountant. She's hold key leadership position as a CFO and director at Canom Innovation Private Limited, and core responsibility as CFO and director. Her role likely to encompass strategy and operational oversight in finance. So again, I am keeping it brief. Welcome you all on the session. Thank you very much. Thank you, Rakesh Bhai. I request Deepika ji to proceed further. And once again, thank you on behalf of WRC and the committee for accepting our invitation and enlightened us. Deepika ji, over to you. So probably we cannot start like this. We need some more energy in the room. So let's stand up and give a round of applause for ourselves. Come on, let's get up. Some more energy, please, guys. Probably now we are ready for our esteemed panelist. वेरी गुड आफ्टरनून. सॉरी आपका लंच थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया, बट टू बिगिन विथ मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, और ये जो ICAI का जो हमारा अल्मा मेटा है वो हम सब के लिए पूजनीय है, तो उसे भी प्रणाम करता हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू द कमिटी, टू द ICAI फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और दिन रात हम इसी पे मेहनत करते हैं. तो क्विकली एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, एंड उसके बाद एक पैनल डिस्कशन रहेगा जिसमें सारे गेस्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ये स्लाइड अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखने लायक है कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो मार्केट में चेंज आया है, तो वो इश्यूज जो आ रहे हैं मेन बोर्ड में और SMEs में, उसमें आप देखेंगे 2020 या उसके पहले जितने नंबर ऑफ इश्यूज आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा फिनोमिनल राइज हुआ है इन द 21-22 से लेके, और लास्ट 2 years में स्पेशली IPOs काफ़ी सारे बाजार में आए हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड जितने फाइलिंग्स हुए हैं या और भी ज़्यादा बढ़ने ही वाले हैं. तो अगर आप देखेंगे तो 2024 और 25 में पिछले कैलेंडर ईयर में 91 मेन बोर्ड इश्यूज थे, एंड 1,60,000 crore का टोटल रेज हुआ था इन मेन बोर्ड, जो इस साल अब तक 6 नवंबर तक ऑलरेडी वी आर ऑल नियर टू दैट फिगर, और ये सरपास होना है जो ऑलरेडी इस वीक में और अगले वीक्स में नवंबर में दिसंबर में जो IPOs है, तो हम इसको सरपास करने ही वाले हैं. SME में आप देखेंगे तो 240 IPOs लास्ट कैलेंडर ईयर में थे. तो अगर आप 240 IPOs हैं तो आप सोचिए कि अगर जितने ट्रेडिंग डेज होते हैं जो मार्केट जिस दिन ओपन होता है, तो एवरेज एक IPO डेली या उससे ज़्यादा ही लास्ट ईयर में देखा गया था. वो इस साल भी अपन उसको सरपास करने वाले हैं. तो इन
इन मेन बोर्ड आईपीओज और एसएमई आईपीओज का जो इतना ज़्यादा आया है वो क्यों आया है, उसके पीछे जो मेन कारण है, एफवाई 2020 में अपन ने देखा कि जो यूनिक इन्वेस्टर्स थे वो 3.1 करोड़ इन्वेस्टर्स थे एनएसई पे, वो आज बढ़ के 11 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए हैं, और टोटल डीमैट अकाउंट्स जो 4 करोड़ थे वो लगभग 20 करोड़ हो गए हैं। टोटल रिटेल इक्विटी होल्डिंग जो थी 15 लाख करोड़ की, वो 36 लाख करोड़ की है, और टोटल म्यूचुअल फंड्स इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द रिटेल पब्लिक जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होता है वो 10 लाख करोड़ से 75 लाख करोड़ का हो गया है। तो जो स्ट्रेंथ बनी है वो अपने जो रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण बनी है, एंड उस कारण से अपन देख रहे हैं कि जो बाकी जो वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अगर अपने एफआईआईज जिनको अपन बोलते हैं वो भी अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स एंड डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन के कारण पब्लिक में ये पैसे जो आ रहे हैं उसके कारण नंबर ऑफ आईपीओज बहुत ज़्यादा बन गए। सो फर्स्ट स्लाइड है वाई आईपीओ। आईपीओ क्यों किया जाता है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अपन को फंड्स अगर किसी कंपनी को चाहिए तो वो आईपीओज लेके आते हैं, बट गेटिंग फंड्स इज नॉट द ओनली थिंग किसी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कोई कंपनी को पब्लिक में आने से उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसकी जो शेयर्स है वो मार्केटेबल हो जाती है। तो एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मार्केटेबल नहीं हो सकती, इट्स नॉट ट्रेडेबल ऑन द एक्सचेंज, बट जैसे ही वो शेयर्स लिस्ट होते हैं मार्केटेबल हो जाते हैं, तो करेंसी बन जाती है आपकी स्टॉक जो होती है। तो उससे कारण क्या हो सकता है? आप जो ट्रांजैक्शंस हैं जो आप सोच नहीं सकते बिफोर, एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि कोई M&A ट्रांजैक्शंस करना है तो उसको कैश अलाउड करना है, लेकिन अगर लिस्टेड हो जाती है तो उसको ट्रांजैक्शन वो कैन डू वाया शेयर स्वैप ऑल्सो। तो M&A ट्रांजैक्शंस वाया शेयर स्वैप किया जा सकता है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंपनी के लिए इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ के लिए ईसॉप प्लान किया जा सकता है। नॉर्मल एक प्राइवेट कंपनीज में अगर एक ईसॉप प्लान किया जाए तो उसके लिए कंपनीज के लिए वो एम्प्लॉयज़ के लिए रादर वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, लेकिन जैसे लिस्टेड कंपनी का ईसॉप्स आता है तो उसके लिए इमीडिएट वेल्थ क्रिएशन होता है। तो कोई भी कंपनी जो 25-30 सालों से अगर चल रही है और एक आईपीओ लेके आ रहा है, मेच्योर मार्केट में लेके आती है, तो उसके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो उनके इतने सालों से काम कर रहे होते हैं, उनको रिवॉर्ड करने के लिए बहुत बड़ा एक तरीका मिल सकता है उनको रिवॉर्ड करने का थ्रू एन ईसॉप प्रोग्राम। मोटिवेशन टू मैनेजमेंट, हमने डे इन डे आउट देखा है कि जिन कंपनीज का आईपीओ के लिए लिस्ट करने का सोचते भी हैं उनका मोटिवेशन लेवल मैनेजमेंट का काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। मतलब हर बार हर क्वार्टर में जाके आपको अगर इन्वेस्टर के सामने यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड आपके जो अर्निंग्स कॉल हैं आपको नेक्स्ट क्वार्टर के और आगे का विजन देना पड़ता है, तो खुद में मोटिवेशन होता है कि हमको कल जाके क्या बोलना है पब्लिक के सामने। तो वो एक अकाउंटेबिलिटी जो कंपनीज की आती है दैट मोटिवेट्स देम टू ग्रो देयर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। तो लिस्टेड होने के कारण वो कंपनी की जो लाइफ है उसमें ग्रोथ एंड उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिनेटली इंप्रूव होता है बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ द डिज़ाइन, आप प्राइवेट कंपनी से जब पब्लिक जाते हैं तो यू हैव टू हैव इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑल्सो इन द कंपनी। नॉर्मली मेन बोर्ड कंपनी में 50% ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट। तो बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंट बोर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण ट्रस्ट बहुत आता है कंपनी के अंदर में, जिसके कारण उसका बिजनेस भी इंप्रूव होता है एंड उसकी क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव होती है क्योंकि उसकी कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ट्रस्ट ब्रिंग्स टू वेज, उसका बिजनेस ग्रोथ के लिए एक एवेन्यू खुलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांडिंग भी इंप्रूव होती है, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है, एंड बिकॉज ऑफ द क्रेडिट रेटिंग इंप्रूवमेंट उसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो सकती है। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ ग्लिम्स कि जो आईपीओज में कंपनीज को अगर जाना है तो नॉट ओनली द फंड्स इज द वन बेनिफिट विच द गेट कि हम लोग फंड्स रेज कर पा रहे हैं, उसके अलावा इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एक कंपनी को पब्लिक होने से उसको मिल सकती है। These are two platforms, basically मेन बोर्ड एंड एसएमई, जो आपको पता ही है। क्विकली अगर मैं बात करूं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अराउंड मेन बोर्ड एंड एसएमई क्या होता है। मेन बोर्ड में मिनिमम जो एप्लीकेशन होते हैं वो 1 शेयर के
किए जा सकते हैं. मतलब एप्लीकेशन मतलब ट्रेडिंग इन द मेन बोर्ड इज 1 शेयर. लॉट्स मिनिमम 15,000 के लॉट्स में एप्लीकेशन आईपीओ आता है, बट ट्रेड आफ्टर द कंपनीज गेट लिस्टेड तो उसमें 1 शेयर में ट्रेड हो सकता है. इन एसएमई प्लेटफॉर्म वो लॉट्स में ट्रेड होता है. तो जो रेगुलेटर्स का इसके पीछे जो रीज़न था कि भाई एसएमई क्योंकि छोटी कंपनियां हैं तो उसमें थोड़े से जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स आए हैं जिनकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट इज बिट लार्जर. तो एचएनआई इन्वेस्टर्स मोस्टली एसएमई में पार्टिसिपेट करते हैं एंड उसके लिए वो लॉट्स में ट्रेड किया जाता है. मिनिमम अलॉटीज इन केस ऑफ एन आईपीओ फॉर अ मेन बोर्ड इज 1,000 जो कि एसएमई में 200 होती है. Underwriting requirement in case of a main board is not mandatory. It is a soft underwriting in case of main board. हालांकि SME के केस में 100% मैंडेटरी अंडरराइटिंग की जाती है. मार्केट मेकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर SME फॉर 3 years, जो कि मेन बोर्ड में रिक्वायर्ड नहीं है. DRHP अप्रूवल सेबी की रिक्वायरमेंट होती है मेन बोर्ड के लिए, बट इन केस ऑफ एन SME DRHP अप्रूवल सेबी की रिक्वायरमेंट, सेबी से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है. वो सिर्फ जो एक्सचेंज में अपन ने फाइल किया उससे अप्रूवल चाहिए होता है. रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स क्वार्टरली होती है मेन बोर्ड में, हालांकि एसएमई में हाफ ईयरली की जाती है. ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अगेन मेन बोर्ड के लिए सेबी बीएसई एनएसई की. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से मैं खाली आपको बता देता हूं कि कंपनी का नेटवर्थ डेफिनेटली पॉजिटिव 1 करोड़ होना चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. और नेम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का है वो एवरेज 15 करोड़ इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि क्या कोई कंपनी जिसकी प्रॉफिट्स नहीं आ रही है या नेटवर्थ नहीं है वो नहीं आ सकता? ऐसा नहीं है. उसके लिए सेपरेट रेगुलेशन है. ये 6(1) ऑफ ICDR के हिसाब से जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर कंपनी इसको क्वालिफाई नहीं करती है तो 6(2) में लिस्टिंग की जा सकता है, जिसमें QIB का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन है, मिनिमम 75% QIB से लाके वो IPO लाया जा सकता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SME प्लेटफॉर्म, पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 25 करोड़ पोस्ट लिस्टिंग. मतलब IPO के बाद 25 करोड़ से ऊपर का पेड अप कैपिटल नहीं हो सकता SME में इफ यू वांट टू फाइल योर एप्लीकेशन. नेटवर्थ डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए. और डेफिनेटली ये जो जनरल क्राइटेरिया है कि प्रॉफिट एबिटा जो है एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स होना चाहिए. NSE ने कुछ दिन पहले एक नया इसमें रूल लेके आया है कि पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी जो 3 साल के अंदर में लास्ट 2 ईयर एटलीस्ट 2 ईयर्स में FCF ही पॉजिटिव होनी चाहिए. उसकी उसने डेफिनेशन दी है जिसमें कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव इन 2 आउट ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स इन द व्हेन यू आर फाइलिंग द IPO. सो दीज आर द मेन व्हिच आई हैव हाइलाइटेड. And again, clean record of promoters, you should not be barred. कोई minimum ownership at least 20% post IPO promoters की होनी चाहिए. ये सब criteria generally for an IPO companies going public should be qualifying. This is the process flow. एक company को IPO अगर जाना है तो उस process से गुजरना पड़ता है. तो the first process starts from decision for making an IPO, and once you make a decision, you have to file a BRLM or a merchant banker. मर्चेंट बैंकर के साथ में लीगल काउंसिल जो है वो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करता है, जो कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में एंड DRHP प्रिपरेशन में उसको हेल्प करता है. तो इस जो कंपनीज को एक प्री IPO चेकलिस्ट दी जाती है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से कंपनीज को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं एंड वो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे DRHP बनता है. DRHP फाइल होता है एक्सचेंजेस में एंड सेबी में, एंड आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस यू कैन इमीडिएटली ओपन द IPO, which is remains open for minimum 3 days, and listing is again within 6 days of opening IPO आप list हो जाते हैं. Generally process time for an IPO takes around 40 weeks. In case of an SME definitely SEBI का observation letter is not required, तो वो process थोड़ा सा 1-2 महीने कम हो सकता है. But in case of main board or SME दोनों केस में generally 35 to 40 weeks is what time is required for completion of the process. These are intermediaries involved in the IPO. Merchant banker के अलावा PR agency, legal advisors, underwriters if external underwriters are required, market makers, registrars and bankers to the issue. कोई भी IPO को सक्सेसफुल बनाने के लिए what is required कि
the intent of the company कि investors का interest protect हो, that is the most important. तो वो ध्यान में रखते हुए अगर कंपनी IPO लेके आती है तो उसका डेफिनेटली सक्सेसफुल किया जा सकता है उसको. तो आई थिंक ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन था और एक पैनल डिस्कशन के थ्रू हम लोग इसको और विस्तार में समझेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, Ratiraj sir, for enlightening us on the IPO process. It's a pleasure to see such wonderful, happy faces today. Good afternoon, everyone, once again. So as Ratiraj sir mentioned, that we have truly come to an age which reflects entrepreneurial energy, investor confidence, and a strong regulatory backbone through the process. So now I'm going to ask a couple of questions to our esteemed panelists. So my first question is to Mr. Krishnan Iyer. Sir, how would you describe the current phase of IPO journey, and what are the key shifts you have been seeing in investor sentiment, in regulation, product innovation, etc.? Sure. So if I look at the IPOs, especially in the SME segment, if we look at the number of IPOs that came and the number of companies that got listed last year, we saw that there was quite a lot of I would say almost all the IPOs got oversubscribed 100 times, 50 times, 80 times. We do understand that the issue size is small. So obviously, a little amount of extra demand would kind of, give those kind of numbers. But then what we also saw was, these companies got listed, and then immediately in the next 1 or 2 days, a whole lot of investors shed the allotment that they received. Now, it was more of a speculation is what the regulators also felt, and based on the feedback that they received from us, sometime in March, they tightened the norms for the SME companies. I can enumerate about 2 or 3 significant ones, where the first one I would say is where they insisted on the EBITDA of 1 crore in 2 out of 3 years. The second I would say was when they said that the OFS can't be more than 20%. So the promoter's skin in the game is there. They also put a cap on the amount allocated towards general corporate purposes, 15% or 10 crores, whichever was lower. And there was also a minimum lot size. That is, any investor would have to take at least 2 lots. That is, commit 2 lakhs to these IPOs. Now, what happened post these kind of changes in the regulation was that we saw that now there is some realistic demand for IPOs, in the sense that we find that investors have now matured and they now understand that unless and until they see value, they're not going to commit their money to it. So to that extent, I would say the speculation around the IPOs has come down a bit. And today we are seeing some realistic kind of numbers when the issue comes out in terms of subscription, in terms of listing as such. So that is the kind of change that we have seen now, if I look at the trend. And what I feel is this is served good for the market, in the sense that if I look at the EBITDA as such, we are only kind of now looking at companies who are really kind of matured enough to get themselves listed in the emerge or in the SME platform. The primary thing that we look at is they should be capable of moving into the main board in 3 years' time. Until and unless that that potential is seen, just merely listing in the SME platform
does not make any sense. Because at the end of the day, if we look at the liquidity in the market also, it does come down in the SME segment. Unless and until the company really has a potential, offers a potential of growth, offers a potential of, growth in investment also for the investor, it's definitely not making any sense just to list and stay there in the SME platform. So I would say that the companies have matured, the market has matured, the investors have also matured in the last, I would say, 10 to 12 months as compared to the earlier period. So my following question would be to Ratiraj sir. So what do you feel from advisory standpoint of view? Are these changes striking a right balance between, accessibility of the capital filing, etc. norms for, growing companies? Definitely. Whenever there is a regulation tightening happening in any system, although that it may seem that there's a bit of pain for abiding these regulations, but in the long run, it helps the investors also. They gain more trust in the system, and that helps the companies to raise more funds going forward. तो इन द लास्ट 1 ईयर में जो भी रेगुलेशंस आया है, तो उसके कारण ऐसा तो आपने ऑलरेडी आंकड़े देखे होंगे हमारे प्रेजेंटेशन में कि उसके बाद भी पब्लिक आर कम मतलब फाइलिंग मोर आईपीओज इवन आफ्टर दैट. तो इसके जो आईपीओ के सक्सेस होने का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कारण कि इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पुट इन मनी. तो इन्वेस्टर्स विल बी रेडी ओनली व्हेन देयर इज अ गुड रेगुलेशन देयर. तो डेफिनेटली ये वेलकम स्टेप है. So how are we advising, client from this perspective, I mean? हाँ, तो डेफिनेटली आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फोरम में बैठे हैं, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है जब अपन एक आईपीओस को पिकअप करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो आती है विच हैज़ टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द डीआरएचपी, तो उसके बेसिस पे ही उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है इन्वेस्टर. तो हमने बहुत केसेस में देखा है कि कई बार बहुत सारा कंप्लायंस या रिपोर्टिंग में गैप्स होते हैं, जो कि हम लोग को चार्टर्ड अकाउंट्स के साथ में बैठ के एंड कंपनीज के साथ बैठ के उसको गाइड करके उसको ठीक करवाना पड़ता है. तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कंपनी इज़ नॉट रेडी, तो फिर उसको फिर डेफर भी करना पड़ता है. तो दिस इज़ माई एडवाइस टू दिस कंपनीज कि जब भी आप ऑडिट करवा रहे हैं तो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से करवाएं, और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों को भी अपन सबको बोलते हैं कि भाई इनको जो जिन कंपनीज का ऑडिट कर रहे हैं तो उनको गाइड करें कि बेटर कंप्लायंस की तरफ जाएं, तो बेटर तरीके से हम लोग आईपीओ कर सकते हैं. That's really insightful, sir. So, as you said, there are a lot of tightening of the disclosures, norm, etc. What do you see the common challenges that is derailing the success of the IPO today in the market? The primary thing is disclosure. See, when a company comes out with an IPO, what is it trying to do? It is trying to sell itself to the potential investors. So until and unless the disclosures are in line with what the company is actually doing, if there's any gap there, or if it is not, I would say, if there's any misrepresentation, the market is very intelligent. The market understands all these things and it discounts the company's valuation immediately. So the success of the IPO depends upon the company and the kind of document that they file. If the disclosure is good and the investors find that there is a potential for the company to grow over a period of time, they will definitely invest. So now, what we are seeing now is that after all the tightening that has happened, after all the mindless speculation that was happening last year, now what we are seeing is the set of investors who are well informed and who are investing in the market for a long-term basis, so that they can get the desired return. Sure, sir. So, as we have seen, the retail participation has been constantly increasing, and there is a trend of high growth tech, fintech companies, etc., going public. So, how are you advising this set of clients from a sustainable business models to justify their valuations to
investor put in money? See, the buzz around valuations आप देख रहे होंगे कि अभी आपका recent IPOs में अपन ने देखा होगा कि public में hue and cry है regarding valuations and all. But we believe that the investors जो इसमें पैसे डाल रहे हैं, who are large institutions, they are already backing, the institutions are backing के साथ में वो companies आती हैं IPOs पे. एंड दीज लार्ज इंस्टीट्यूशंस आर वेल इन्फॉर्म्ड कि उसकी जो वैल्यूएशंस राइट होनी चाहिए. कोई भी कंपनी जब अपने मार्केट में आ रही है तो वो इन्वेस्टर्स की जब एंकर राउंड कर रहे हैं तो उसमें डिस्कशंस काफ़ी डीप डाउन होते हैं रिगार्डिंग द वैल्यूएशंस. तो इस केस में जनरली कंपनीज जो कोई भी वैल्यूएशंस को अगर पॉइंट जो आता है अल्टीमेटली वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के साथ में ही होता है. Well understood, sir. Krishan sir, a similar question to you. From an exchange point of view, are we doing anything to see more realistic IPO pricing? Because we see of late there's significant listing gains, and then there are sharp corrections in the market, and people keep questioning. I mean, how did it happen? So valuations are something which we don't get into. What we are basically looking at is the quality of disclosure made in the DRHP, and whether it is congruent with what the company is doing. Like for example, if let's say a company just makes a mention of some line of business related to drones, whereas it is actually into providing manpower to various industries. Obviously, there is a big gap in the DRHP, right? I mean, today, just for the sake of selling the IPO, if I make a disclosure in the DRHP, which is completely unrelated to my main line of business, it is obviously kind of a misinformation, a misguidance given to the investors in general. So those are the kind of checks that we do, and we try to ensure that the DRHP is talking the right language. It is disclosing all the necessary facts. At the end of the day, our responsibility is also towards the investors, primarily towards the investors. They trust us. And that's the reason why our focus is mainly on the disclosures and whether it is meeting all the regulatory parameters as defined by the regulations. Thank you, sir. I believe exchange intermediaries and all the participants are, exchange participants are doing an amazing work to protect investors. So what do you think Rathiraj sir is going to drive the next IPO wave in the market? IPO wave तो we are already seeing, मैडम. तो नेक्स्ट IPO wave जो आप बोल रहे हैं वो तो ऑलरेडी चालू है. एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, क्योंकि अगर अपनी कंट्री को, जैसे प्रीवियस सेशन में अपने चेयरमैन साहब ने भी बोला, प्रेसिडेंट साहब ने, कि 4 ट्रिलियन से अगर 40 ट्रिलियन जाना है तो कैपिटल मार्केट के बिना वो पॉसिबल नहीं है. कोई भी इकोनॉमी को बढ़ने के लिए उसकी कंपनीज को आगे बढ़ना पड़ेगा. तो कोई भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए कैपिटल की रिक्वायर्ड है. कैपिटल इन फॉर्म ऑफ डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है. डेट की एक लिमिटेशन है. तो अल्टीमेटली जो कैपिटल है वो अपना जो इक्विटी कैपिटल मार्केट्स है वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम देता है टू रेज मनी फॉर इट्स ग्रोथ. तो यहाँ से अगर कंट्री को आगे बढ़ना है तो कैपिटल मार्केट्स का रोल डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा रहने वाला है. तो आईपीओ वेव की अगर अपन बात करें तो आईपीओ वेव इज गोइंग ऑन, व्हाट आई एम से. इसमें कुछ हिकअप्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कल कोई भी कारण से एक्सटर्नल शॉक्स अगर मिलते हैं तो हो सकता है ये कुछ पीरियड के लिए, जैसे हमने अभी लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के मैंने देखा था कि बहुत आईपीओज नहीं आ पा रहे थे बिकॉज मार्केट्स वर वेरी चॉपिंग. तो बट उसके बाद अपन ने देखा बिकॉज ऑफ दैट जो नहीं आ पाए वो उसके नेक्स्ट लास्ट जो प्रीवियस क्वार्टर अपना गया सितंबर क्वार्टर, उसमें रिकॉर्ड आईपीओज इशू, एक दिन में 10 आईपीओज भी निकले. तो जैसे सर ने बताया 66 फाइलिंग्स एक 30 सितंबर को हुई है. तो आईपीओ का वेव जो है वो मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म में अभी रुकने वाला है. Absolutely. I mean, we currently in the wave. I mean, nothing denying that.
बस मतलब what I feel is that अगर आप potential देखो, I mean more than 7 crore MSMEs are registered with the government. चलो इसमें से अगर मैं SMEs या medium scale companies भी उठाऊँ, it's around 5 lakh. And today, both the exchanges put together, we are roughly around 1,500 companies listed on the SME platform. So you look at the gap, 1,500 and 5 lakh. And obviously, this kind of number is not available in the main board. So obviously, the SME should be as a feeder system, which is actually giving the companies some time to actually get used to the regulatory requirement once you get listed and then move to the main board. So we should be actually looking at the SME as a feeder system to move companies slowly into the main board, and that's how it's going to grow. So we are in a very good space right now. सर इसमें वी हैड ऑब्जर्व्ड अभी रिसेंट जो डर्थ ऑफ आईपीओस थे तो इन्वेस्टर थक गए। मैं जितने आईपीओस आ रहे थे बोले यार मैं और देखने के लिए अभी मूड में नहीं है ना, मेरे पास इतना पैसा बचा है। तो ये चैलेंजेस अपन को आएंगे, बट डेफिनेटली हाँ, मनी कमिंग इन द म्यूचुअल फंड्स आल्सो विद न्यू प्लेटफॉर्म्स सच एज SIFs आल्सो कमिंग इन टू प्ले। तो ये सप्लाई भी डेफिनेटली यहाँ से बढ़ना चालू होगा, तो आईपीओस अल्टीमेटली सक्सेसफुल रहने वाले गुड कंपनीज होनी चाहिए, दैट इज व्हाट Definitely. Thank you, sir. Probably we all have mastered now from an IPO perspective where strategy, timing, transparency, governance, everything matters. So yeah, now I would request Mr. Praful sir to kindly share his reflections on the discussion. No, thank you. As I said in the beginning, these two people are really, they have the hands-on practical, experience. And as we are discussing everybody, as sir also said, ki 5 lakhs company versus 1,500 companies. Of course, one needs to see the statistics of these 5 lakhs companies, how many are actually making profits, how many are the dormant companies kind of thing. But even if we take 10% are the good companies kind of thing. So still 1,500 to 50,000 is a big gap, and I think that is the potential. As I said in the beginning, see, we, the chartered accountant, when I was the president council member, every time we used to talk how to grow your practice, what is the next kind of thing. I think the sentiment of the chartered accountant, we stick to timelines. September mein baithna hai, October mein baithna hai, that 12 o'clock in the night or 1 o'clock in the night we will sit, but we will not identify our client who could be, requiring additional funds. And I think that could be the better professional opportunities, because now flow will be there. As I said in the beginning, now government is taking all lot of steps to make India as one of the, very prominent economy in the world. And if that really happens, naturally the flow of the capital market is the only place which can, support that particular growth. Because if you go to the bank, I was earlier in the bank of State Bank of India as a director, and I know what kind of, restrictions it comes when, because banker have, other responsibilities. They have to see the, actual, the collaterals and all those things. So it becomes difficult. So for entrepreneurs, it is a mixed bag. Some debt, but some equity. Again, individual, that capacity or capability will be less. So therefore, this kind of, definitely this, IPO route will be the potential opportunity not only for the chartered accountants, but actually we always say we are partner in the nation, as a chartered accountant. So I think I see lot of potential. And I also see now Mr. Krishnan is chartered accountant, Ratiraj is chartered accountant, Deepika is chartered accountant. So many chartered accountants are also entering into this particular field. So lot of guidance, and that friendly guidance will also be available to you. So, there is always very common connect when you approach a chartered accountant, whosoever, he could be regulator, but he could be also, into merchant banking activity. So my suggestion would be come together, identify the potential clients and be part of this particular journey. Definitely future is really bright, as everybody is saying, and since morning, right from the president and from the SEBI people, everybody is talking about, the future of the capital market. So I see a lot of potential, madam, if I had to answer. Thank you, sir, for your valuable insight. Now we'll open the floor for question and answers. Just one small disclaimer, please do not ask any specific company related questions. Thank you. Can you please pass the mic?
We are really running short of time, so those who are interested, please raise your hand so they can take one or two questions only. So please raise your hand quickly as possible. Krishnan sir, this is a question for you. In 2025, there had been around 150 odd SME IPOs, out of which I guess around 50 companies are right now trading below 50%, and many companies have got listed on the listing day itself below 20%. So is there any compliance like for those on the main board, for any compliance like for the SME IPOs? We have market makers there for 3 years. That's as per the regulatory requirement. But again, I mean, what I would say is that it again goes back to the valuation, whether the bankers really and the promoter really valued the company in a proper way. Because the market is intelligent, the market ultimately is the truth, right? So if post-listing, if it has come down, obviously the investors are not maybe happy with the pricing at which it has come. That's one. Secondly, I would also, it's my hope and wish that we have some more institutional participation also in the SME segment. If that comes, then that would actually kind of help in stabilizing the price too. Because they come with a lot more depth in their pockets, and that kind of helps in stabilizing the price, and they have a better, I would say, infrastructure in place to analyze as compared to the normal retail investors as such. Ratiraj, if you can add. I'm 100% agreed to sir, what you have said. Ki institutional participation will definitely improve the liquidity in the system. But as on a practical sense, what we observe also is that companies, once they get listed, they forget about the investors. मतलब IPO के टाइम पे तो वो मार्केटिंग की सबसे मिले, IPO आ गया, पैसा आया, यूटिलाइज किया, फिर जाने अनजाने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं. और SME के केस में ये ज़्यादा होता है. इसीलिए हम लोग भी जब SME की IPOs के लिए किसी को एडवाइस करते हैं तो एक बेसिक साइज 10 करोड़ 20 करोड़ की एक IPO अगर आ रही है तो उसके लिए कंप्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा होता है. तो कंपनी को डे इन डे आउट इवन आफ्टर IPOs उसको इन्वेस्टर से एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है. उसके लिए IR एजेंसीज होते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी है लेकिन लोगों को पता नहीं है तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा. तो इसीलिए वो मेन बोर्ड में जब तक नहीं आ पा रहे हैं तब तक जनरल पब्लिक उसको देख भी नहीं रही है. तो इसलिए कंटिन्यूस इन्वेस्टर एंगेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टर्स बहुत है, पैसे लगाने वाले आज के दिन में 1 लाख करोड़ रुपए का कमिटमेंट्स AIFs के पास पड़ा है, दुनिया भर की HNIs है, रिटेल HNI बन गए हैं. तो पैसे की कमी नहीं है, वो राइट फोरम में पहुंचना, राइट ऑडियंस के सामने ज़रूरी है. एंड डेफिनेटली सर ने जैसे बोला कि अगर वैल्यूएशन स्ट्रेच हुआ रहेगा पहले तो लिस्टिंग पॉप के बाद फिर वो नीचे आ जाता है. तो हर धंधे में हर तरीके के लोग हैं काम करने वाले. तो मिसक्रिएंट्स की भी बहुत ज़्यादा है स्टॉक मार्केट पे, वो समझदारी से उसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए. Last question, anyone? Yeah. This is for Mr. Iyer. Whenever we say about investors, they are being well informed and, you have well documents, is that currently we just have a lot of static documents. Okay. For more investor being educated, can there be an interactive model where you can have a model design for investors where they can interact, deal with it, have some projections? You can understand, for more of a retail investor, we know that the institutes will understand the numbers and, take the decision to invest or no. But more for a retail investor, we have more of static documents. We don't have an interactive model. Can that be a solution? So I can, I will take this question in 2 parts. One, to answer your question directly, you have some modules in the NISM which you can do to get the necessary awareness about how the stock market functions, how, what is an IPO, etc., etc. That's one thing. Secondly, we also have outreach programs where we organize a lot of investor awareness kind of sessions.
And over here, it's the first half could be where we are giving the presentations as per the mandate, but post which it's a very interactive kind of a session where a lot of questions get answered. Those kind of programs can also help. Other than that, I can't think of anything. As of now, what is available is the programs in the NISM, and where you can enroll, do the course at your convenience. It's all on the website. And there are certification programs also where you get a certificate at the end of the day. Thank you, sir. Yeah, that's one. And of course, our programs are there, outreach programs are there, which you can attend. थैंक यू सो मच सर. मूविंग फॉरवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस सर, जैसे कि आपको पता कैपिटल मार्केट का प्रोग्राम में ज़्यादा तो हम पूछ नहीं सकते, पर किस सेक्टर में हमको तेजी दिख रही है ये आने वाले साल में, रतिराज सर? सर जैसे कि अपन ने अभी इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अभी जैसे अब सर सेक्टर का नाम consumers सर, के पास पैसे बहुत आए हैं सर वी रनिंग विद टाइम शॉर्ट. सेक्टर का नाम सर? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, डिफेंस है जो कि बजवर्ड है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अभी जैसे सब कौन से आईपीओ आने वाला सेक्टर सर? सेक्टर सर, आई एम नॉट. आपको कंपनी का नाम चाहिए? नहीं सर, कंपनी का नहीं, सेक्टर सर, सेक्टर. सेक्टर्स जो न्यू वेज सेक्टर्स है ना, Defense, टेक्नोलॉजी, एआई, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, देन डिफेंस, एरोस्पेस, ये सब में डेफिनेटली बहुत और मेन बोर्ड वाला सेक्टर सर? मेन बोर्ड हो चाहे एसएमई. With this, sir. Thank you so much, sir. Moving forward, I request let's give the great round of applause to all the speakers, panelists, lovely audience. So आपको ध्यान रखना है कि AI, डिफेंस, और मुझे तो किसी ने कहा था कि अब हमारा देश आलसी हो रहा है. जो कंपनियां आलसी लोगों के लिए जो सामान तैयार कर रही है वही अच्छा देश को चलाएगा और उसमें रेवेन्यू बढ़ेगा, मुझे किसी सज्जन आदमी ने बोला था. सो थैंक यू रतिराज सर, कृष्णा अय्यर सर, दीपिका मैडम, एंड our past president ICI Prafulla sir. I request let's give the memento to our past president, joined with the chairman Ketan Saiyya sir. I request come forward Prafulla sir. We give the token of appreciation as well as Secretary General Savla madam. Chairman Ketan Saiyya sir, please join us. Sanjay bhai please. After 15 minutes, sharp 15 minutes, we will start our important session. So I request all the participants that please join on time. Thank you sir. I request Prafulla sir and Ketan sir give the memento to Ratiraj Sri Barwal sir. Thank you. I request Krishna Iyer sir give the memento on behalf of WRC by Ketan Saiyya sir and Prafulla Chhajer sir. And the moderator of the day, Lady of Empowerment, Deepika Jain. Thank you, madam. And after that, let's have the one group photo. Please, BM sir, Deepika sir, jaldi se sir, group photo please. Deepika madam please. Dipti madam, sorry. Please come forward fast.